Assalamu alaikum, students of 9th class. How are you all? Hope you all will be fine. Okay, students, it is my lecture number 2B. We have given the name of these lectures, this series as B series, because as it is the second wave of COVID-19. So, with the relevant of it, we have given the names of these all lectures as the B series lectures. So that is 2B. Okay, now in the lecture 2B, we are going to study about the types of solution. In the previous lecture, students, we have discussed about the definition of solution, solute, solvent, and aqueous solution. And I have given you the homework to write all these definitions in your registers. Hopefully, you are doing the homework in registers. Please take your homework and study seriously, and don't keep the work in pending. Okay, otherwise it will be a great burden for you. So please do the work on time. Okay, now let's move towards the today's lecture, students. Now we are going to study about the types of solution. As you know that there are 9 types of solution. Okay, uh, like you can see in the image in the picture, students. First one is taken as solute, the other one is taken as solvent. Okay, so there are 9 types of solution, like as gas into gas, gas into liquid, gas into solid, liquid into gas, liquid into liquid, liquid into solid, and then number 7 is solid into gas, solid into liquid, and solid into solid. So these are 9 types of solution, so you can easily make their types. Okay, first 3 are the gas series, ठीक है, gas into gas, number 1 gas into gas, number 2 gas into liquid, number 3 gas into solid, then number 4 liquid into gas, number 5 liquid into liquid, and liquid into solid. Okay, number 6, number 7 solid into gas, number 8 solid into liquid, and number 9 is the solid into solid. Now we'll move towards the examples. Starting the types. Right, first I will make it chart, solute, solvent, and we'll take, here I'm writing solute, here I can write solvent, and here we will see their examples. Okay, examples. Okay, now when gas is solute, okay, so gas into gas, gas into liquid, gas into gas, gas into liquid, and gas into solid. We are taking these examples: gas into gas, gas into liquid, and gas into solid, right? So these are 3 types. First we will study 3 types. Okay, we can easily make their types, students. First I will tell you, बहुत easily बना सकते हैं, gas into gas, gas into liquid, gas into solid. Okay, now next we can make the types. These are 3 types. 3 types. Okay, then we can make the types in this way, like liquid, right? Liquid into gas, liquid into liquid, and liquid into solid. So these are more 3 types. 3, 3, 6. These are 6 types. Now next you can make the types like this one: solid, solid into gas, solid into liquid, and solid into solid. Okay, in this way we can make 9 types. Okay, students, in this way we can make 9 types: solid into gas, solid into liquid, and solid into solid. These are 9 types of the solutions. So now let's we will discuss them from starting. ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, like we are taking the type gas into gas. Okay, it is the first type. Then we will take gas into liquid and gas into solid. Okay, so its best example of gas into gas is the air. Okay, you know, air is the mixture of different gases. For example, in the air there are the many gases, like there the nitrogen gas, ठीक है,
oxygen gas, hydrogen gas, um, uh, and ammonia gas, sulfur dioxide gas, right? Carbon dioxide gas, carbon monoxide gas, maybe. Uh, so there are number of gas, students. Okay. So, for example, you know that nitrogen gas, it makes the 78% of the air. Okay, nitrogen gas, it is in the highest amount, that it makes 70% portion of the air, and oxygen gas, it makes is 21% portion. Okay, 21% composition of air compose. It depends upon oxygen, and 78 and 21, that will be 99%. Okay, total it is 99%. Remaining 1% is made by other gases. 1% is made by other gases, so it will be 100%. Okay, class. These are the other gases. Okay, so it is all about the gas into gas examples. So its best example is the air. In the air, you know, 78% is formed by nitrogen, and 21% is formed by oxygen, and 1% is formed by the other gases. Okay. Now gas into liquid. Gas into liquid. Its example is all the cold drinks, carbonated cold drinks. Okay. Cold drinks. Okay. Those have carbon dioxide gas. For example, like Coca-Cola, Pepsi, right? In these all gases, carbon dioxide gas is mixed by pressure. Okay. So these are the carbonated cold drinks. ठीक है ना? Like bubble up is also the कोल्ड ड्रिंक. बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मिक्सअप की जाती है, और मिक्सअप करके इसकी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं. ठीक है. अच्छा, वन मोर एग्जांपल इज अमोनिया गैस इन वाटर. Ammonia can be dissolved in the water. So ammonia gas in water, it is the second example. And air dissolved in water. ठीक है ना? Air which can be dissolved in water, that is also the example of this one. So I have given 3 examples. One is the carbonated cold drinks, soft cold drinks जितनी होती हैं सारी की सारी, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है सारी. अच्छा, अमोनिया गैस इन वाटर. Ammonia gas is can be dissolved into the water. And the other example is the air dissolved in the air dissolved in water. Okay, class. So these all are the examples of gas into liquid. Now one more is next third example is gas into solid. Okay. Third is gas into solid. Okay. You can take this example like hydrogen gas absorbed over palladium metal. Okay. Palladium is a metal. ठीक है ना. Palladium जो है metal होता है. ठीक है. पैलेडियम DIUM. ठीक है. पैलेडियम मेटल. ठीक है. इसमें जो है इसका जो पैलेडियम मेटल अगर रखा रहे कहीं पर बहुत टाइम तक पड़ा रहे, तो उसमें जो है जब एयर पास होती है तो एयर में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पैलेडियम मेटल में डिजॉल्व होने लगती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है. ठीक है ना. उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इनटू सॉलिड. यानी गैस किस में जा रही है? सॉलिड में. अब सॉलिड क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट. अब देखिए सारी चीजें जो है ना यहाँ पे ये सब सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट मीन ग्रेटर अमाउंट में है. ठीक है. व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट? दिस ऑल आर इन द ग्रेटर अमाउंट. ठीक है. सब ग्रेटर अमाउंट में है. ठीक है. और व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूट? दे ऑल विल बी इन द स्मॉलर क्वांटिटी. अभी तक स्टूडेंट्स छोटी क्लास में हमने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी. ओनली लाइक वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, राइट, वाटर एंड मिल्क, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है. सिंपल एग्जांपल्स पढ़ी होंगी. बट दिस ऑल आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ये भी सब सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप यहाँ स्टडी कर रहे हो. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द लिक्विड इनटू गैस. ओके. Liquid into gas, liquid into liquid, liquid into solid. Okay. So liquid into, we will see the example liquid into gas. ठीक है. इस best example is the cloud. क्या है example इसकी? Cloud. You know that liquid. ठीक है ना. Cloud is
वेरी ग्रेटर इन द साइज, क्लाउड बहुत बड़े साइज का होता है, आपको पता है, ठीक है ना। क्लाउड में जो है ये क्लाउड पे जो है आपके पास जो वाटर है, ठीक है, वो क्लाउड में फिल अप होता है, ठीक है, और ये रेन की फॉर्म में हमें वापस मिलता है, ठीक है। क्लाउड बेसिकली क्या होता है, एयर होती है, ठीक है, कंडेंस्ड एयर होती है, यानी ऐसी एयर जो एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है, वहाँ कलेक्ट अमाउंट में कलेक्ट हो जाती है, दैट इज द दैट फॉर्म्स द क्लाउड। अब क्लाउड में क्या होता है, जब ऑपरेशन होती है, आपको पता है कि जब सी साइड पे और बहुत जगहों पे जहाँ पर वाटर होता है, जब सनलाइट पड़ती है वहाँ पर ऑपरेशन होती है, तो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और मूव करने के बाद जो है वो वाटर जो है क्लाउड्स में कलेक्ट हो जाता है, राइट। तो कलेक्ट हो जाता है, और वो फिर जब क्लाउड फिलअप हो जाते हैं, तो वो जो है उस वाटर को रेन की फॉर्म में जो है वापस जो है वो दुनिया में वापस रेन की फॉर्म में रिटर्न कर देते हैं उनसे, ओके। So water in the air, right? It is the water in air, right? That is example of the liquid into gas. आप देखें यहाँ पे गैस जो है यानी एयर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, और लिक्विड जो है वो ऐसे समय में कलेक्ट हो रहा है क्लाउड के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन वो कलेक्ट हो रहा है। So that is the example of liquid into gas, okay. Liquid into liquid instance, there are number of example of liquid into liquid, बहुत सारे एग्जांपल्स है, हर कोई भी लिक्विड ले ले उसका उसमें, फॉर एग्जांपल लाइक मिल्क इन वाटर, ठीक है, मिल्क इन वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, मतलब सिंपल एग्जांपल, ठीक है, मिल्क इन वाटर। अब यू कैन टेक दिस एग्जांपल, मिल्क इन वाटर, ठीक है ना, इसकी मिल्क जो है वाटर में, अब मिल्क जो है वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, मिल्क थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, मिल्क इनटू द वाटर। नेक्स्ट यहाँ पर अल्कोहल इन वाटर, यू कैन टेक द अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। मिल्क इन टी, जो हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं हम, ठीक है, टी का जो वाटर होता है उसमें मिल्क जो है उसके अंदर डालते हैं, तो ज़ाहिर है टी ज़्यादा होती है, यानी सॉल्वेंट होती है वो, और मिल्क जो है वो भी लिक्विड ही है, लेकिन क्या मिल्क लेस क्वांटिटी में है, तो उसे हम सोल्यूट कंसिडर करते हैं। व्हाट डू वी कंसिडर इट, वी कंसिडर इट एज सोल्यूट, ओके। सो दैट इज द एग्जांपल, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज द लिक्विड इनटू solid, okay. The liquid into solid is example is the amalgam, okay. Mercury in sodium, what is the amalgam? Amalgam is the it is the mercury in sodium is called as the amalgam, ठीक है ना। or you can take the example of water in jelly powder, ठीक है। liquid into solid के example, simple example दे सकते हैं, water in jelly powder, ठीक है, या water in custard, you can take the example वाटर इन कस्टर्ड, कस्टर्ड बनाते हैं ना, वाटर इन कस्टर्ड, ठीक है, या लाइक दिस आर द एग्जांपल क्लास। तो वाटर इन जेली, वाटर इन कस्टर्ड, राइट। सो दैट इज एग्जांपल नंबर 5 एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 6। एमल्गम इज आल्सो द एग्जांपल क्लास। एमल्गम में मरकरी इन वाटर, यानी मरकरी जो है वो लेस अमाउंट में होता है, और जो है मरकरी जो है मरकरी इन सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है, यानी मरकरी, ठीक है, mercury hydrogenum is symbol, mercury symbol is hydrogenum Hg in water, ठीक है ना, यानी mercury लेस का अमाउंट में होता है, एज सोल्यूट वर्क करता है, और जो है वाटर जो है आपके पास इसमें जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है ना, mercury in sodium, राइट। तो सॉरी, जो आपके पास mercury है वो एज सॉल्वेंट वर्क करता है, ठीक है, mercury इज वर्किंग लाइक एज सॉल्वेंट, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो है वो वाटर जो है आपके पास ये सॉलिड के तौर पे काम करता है, ठीक है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोर अदर एग्जांपल्स टुवर्ड्स द कैटेगरी ऑफ सॉलिड। solid into gas, solid into liquid, solid into solid, okay. Now let's see the examples. Solid into gas, the best example is the smoke, okay. Smoke, you know that in the smoke there are the carbon particles in air, ठीक है ना। आपने देखा होगा स्मोक जो है ब्लैक कलर का होता है, धुआं जो है ब्लैक कलर का सिया रंग का होता है, ठीक है। तो उसमें सिया रंग का क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसको ब्लैक करते हैं।
तो कार्बन पार्टिकल्स इन एयर ज़्यादा अमाउंट में होती है और कार्बन पार्टिकल्स लेस अमाउंट में होते हैं, बट देयर कैन बी सीन इजीली. ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्मोक. सॉलिड इनटू लिक्विड, शुगर इन वाटर. ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, द सिंपल एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, sugar in water, salt in water, okay, sugar in milk, right? So these are the examples. Salt in lemon juice, right? So these are the examples. Okay, students. Now next is the solid into solid. Okay, let's see the example of solid into solid. We can take the example in the form of alloys. Okay. Now what are the alloys? Okay. Alloys, these are the alloys are the mixture of two or more than two substances. ठीक है, the substances may be solid and solid into liquid. ठीक है, there is no particular formula. ठीक है, तो जब दो solids जो है आपस में मिलाए जाते हैं, ठीक है, that may be metal and that may be non metal. ठीक है, metal या non metal कुछ भी हो सकते हैं. तो जो है जब दो मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है, या एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल को आपस में मिलाया जाता है, या दो से ज़्यादा भी सब्सटेंसेस होते हैं, उनको किसी खास कंपोजिशन के साथ मिलाया जाता है, तो जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वो उसे हम कहते हैं एलॉय. ठीक है, फॉर एग्जांपल इज बेस्ट एग्जांपल इज द स्टील. ठीक है, स्टील इज नॉट द प्योर मेटल. ठीक है, स्टील जो है ये खास कोई मेटल नहीं है. ये स्टील जो है एलॉय होती है, जो कि बहुत ख़ास कंपोजिशन के साथ बनाई जाती है, जिसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको मिक्सअप किया जाता है आयरन में. फॉर एग्जांपल कार्बन पार्टिकल्स, सल्फर, फास्फोरस, दिस ऑल आर मिक्स्ड इनटू द आयरन. ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स को आयरन में मिक्सअप करके स्टील को जो है बनाया जाता है. ठीक है, ओके, आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ अलॉय, लाइक ब्रास है, कॉपर एंड जिंक. ठीक है, जिस द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रोंज है, कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है. ये इस तरह से स्टील जो है बेसिकली कार्बन और आयरन का एलॉय होता है. इस तरह से जो ग्लास है, ग्लास के जो बनाए जाते हैं, ग्लास के डिफरेंट वैरायटी ग्लास होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्लास होते हैं, तो ग्लास भी एक तरह से एलॉय होते हैं, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट कंपोजिशन आपस में मिक्सअप करके ग्लास को बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, so that is all about the types of solution. Now we have discussed about the 9 types of solution. So please into your books you can study them. Books से जो है आप उसको स्टडी करें और लेक्चर भी अच्छे से सुने. If you have any problem then you can ask me. Okay, okay students, now we will move towards the homework for today. The homework is that write the 9 types of solutions and give their examples. Okay, write the 9 types of solution and give their examples. Okay, students, in your book there is a table. In the tabular form there is there are the 9 types of solution. You can write the types from there. Okay, बुक में देखिए आंसर है, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे और इसका आंसर जो है बुक से आप जो है नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, इजी है. सो प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन टाइम. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.